This video is on the numericals on dimensions. As already discussed in our video on the uses of dimension, we have seen there are three uses of dimension. To check the accuracy of a relation, to derive a relation between various physical quantities, and to convert from one system of unit to another system of unit. Now, in the application, ये जो पहला application है, to derive a relation between various quantities. Yeah, whether we have to check the accuracy of a relation. In this कई ऐसी क्वांटिटीज के डायमेंशंस यूज होते हैं जो अभी तक हमने पढ़े नहीं है लेकिन वो डायमेंशन में आते हैं. तो we will first of all see the dimension of those quantities which are important for us while doing these questions. जैसे सबसे एक पहले है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी. और ये जो कैपिटल जी है ये आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से. In case we have two bodies of masses m1 and m2, suppose I have two bodies, one is having a mass m1, other is having a mass m2, and they are having the distance between them is r. So this is the formula: F is equal to g m1 m2 upon r square. So the dimension of g will become equal to the dimension of F into r square upon m1 plus m1 into m2. अब F क्या है यहाँ पे फोर्स है. फोर्स का डायमेंशन हमें पता है mlt माइनस टू होता है. R is the type of distance, तो उसका डायमेंशन हो जाएगा m. And m1 and m2 both are masses. m1 और m2 दोनों क्या है, masses है. तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, m हो गया. तो कैपिटल G का डायमेंशन हो जाएगा mlt माइनस टू इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर. So that will be equal to how much? M to the power minus 1, L to the power 3, T to the power minus 2. The second unit quantity which is quite usually used, that is say pressure. Pressure का formula होता है force upon area. Now we already know that the dimension of force, we have the dimension of force is how much? mlt minus 2. And in case you want to see that how this dimension is come, we know force is mass into acceleration. The dimension of mass is m, dimension of acceleration is lt minus 2. So the dimension of force is mlt minus 2. So force will become how much? mlt minus 2 divided by L square. And if I take it to the numerator, ml minus 1, T minus 2. So the dimension of pressure is how much? ml minus 1, T minus 2. इसके अलावा दो और क्वांटिटीज ऐसी हैं जिसका डायमेंशन सेम होता है सीधे. एक होता है स्ट्रेस. स्ट्रेस ऑल्सो इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. स्ट्रेस का फॉर्मूला भी फोर्स अपॉन एरिया होता है. इसका डायमेंशन भी कर देगा mlt माइनस 2. फिर एक क्वांटिटी होती है जो स्ट्रेन होती है. स्ट्रेन का मतलब होता है change in length upon original length. Strain is the change in length upon original length. अब क्योंकि ऊपर भी लेंथ आ रही है उसका डायमेंशन भी एल हो गया, नीचे भी लेंथ आ रही है, तो स्ट्रेन का डायमेंशन कुछ नहीं है. m to the power 0, L to the power 0, T to the power 0. Now there is a quantity which is known as Young's modulus of elasticity. And Young's modulus of elasticity is the ratio of the stress and strain. आगे जब हम पढ़ेंगे तो more precisely it is longitudinal stress upon longitudinal strain. But here we are concerned only with the dimension. So the dimension of how much stress is ml minus 1 T minus 2. Strain is having no dimension. So the dimension of Young's modulus will become how much? ml minus 1 T minus 2. So this is an important question from examination point of view. अगर आपसे पूछ लिया जाए कि name two quantities which have same dimension. In case it is asked, name two quantities which have same dimension. So we can say stress, pressure, Young's modulus. They are having the same dimension.
एक और दो दो और क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनका डायमेंशन यही सेम होता है आपस में, वर्क और एनर्जी. And in case you want to see the dimension of work, we know work is how much force into displacement. Now, what is the dimension of force? MLT minus 2. And displacement is the type of length. So its dimension is how much? L. So ML2 minus 2. अब क्योंकि एनर्जी भी क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क. तो एनर्जी का डायमेंशन भी वही. अब जितनी तरह की एनर्जी है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, सबका डायमेंशन क्या होगा? ML2 3 minus 2. इसके अलावा कुछ और क्वांटिटीज जो जिनके डायमेंशन यू शुड नो. फर्स्ट इज सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन इज डिनोटेड बाय टी. सरफेस टेंशन किसी भी लिक्विड की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है. और सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ. अब हमें पता है फोर्स का डायमेंशन क्या है? MLT माइनस 2. लेंथ का डायमेंशन L है. अब जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो L कैंसिल हो जाएगा. तो ML0T-2. तो इस टीम का सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या हो गया? ML0T-2. And what is surface tension? I told you it is a property. It will be done in the detail. It is a property of a liquid by virtue of which it behaves as a stress membrane. Then there is one more quantity whose dimension is quite oftenly used in the numericals. That is viscosity. And this is more precisely known as the coefficient of viscosity. विस्कोसिटी वो प्रॉपर्टी होती है किसी लिक्विड या गैस की. लिक्विड और गैसेस को मिला के हम लोग फ्लूइड्स भी बोलते हैं. तो जैसे सॉलिड्स में फ्रिक्शन होता है उसी तरह से लिक्विड्स में विस्कस फोर्स होता है. और ये देखा जाता है विस्कस फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नीटा ए वी अपॉन एक्स. The formula for viscous force is given by neta A V by x. And F is the force, neta is the coefficient of viscosity, A is the area, V is the velocity, and X is the distance. Now I am interested in the dimension of neta. So the dimension of neta will become F upon A V upon X. Now the dimension for force is how much? MLT minus 2. The dimension of area is L square. Velocity is LT minus 1. Distance is L. So LL will cancel. On going in the numerator, that will become ML minus 1 T minus 1. So do remember the dimension of coefficient of viscosity is ML minus 1 T minus 1. So we have done the dimensions first of gravitational constant, pressure, stress, Young's modulus, then work and energy, surface tension, viscosity. Frequency is the easy thing. In case someone asks you the unit of frequency, and the frequency which is usually denoted by nu or n. Frequency is always the reciprocal of the time period. So the dimension of the frequency will become how much? It is the reciprocal of time period, m0, l0, t to the power minus 1. In case that is time period, then the dimension of time period is denoted by t. And time is always measured in seconds. So these are some of the quantities whose dimension we should know if we are. There is one more unit that is known as K. K is known as the coefficient of thermal conductivity. Coefficient of thermal conductivity. As already known to us, there are three units, length, mass, time, which are mainly used in mechanics. And in addition to that, we have four more fundamental quantities, namely the current, temperature, luminous intensity, and amount of substance. For heat, we have the temperature. Now, there is a quantity which is known as the coefficient of thermal conductivity. If H is choose the amount of heat flowing, A is the area,
and I am denoting the temperature by theta. So there is a formula Q is equal to Ka theta 1 minus theta 2 into T upon D. Here T stands for time, D is the distance. Actually, it is like this. Suppose we have a, say, cube. Now what is happening? This end is having a temperature of theta 1. This end is having a temperature of theta 2. And theta 1 is more than theta 2. Since theta 1 is more than theta 2, what will happen? Heat will flow from this end to this end. If H is denoting the rate of flow of heat, then the rate of flow of heat is given by heat upon time. And that is given by Ka theta 1 minus theta 2 T upon D. Now, in case I want to find the dimension of K, now Q is heat. Heat is a form of energy. So it has a dimension ml2 T minus 2. This is time. So T. Area will have a dimension of L square. And the dimension of temperature is denoted by theta. Now, this I have already taken here. So I will not write it here. Upon what is the dimension of this is D distance to L. So the dimension of K will become how much? Now if I take it to the numerator, ml2 T minus 2 into L divided by, now this L square and theta will go into the denominator, L square theta into T. L square cancels, so I will get K is equal to mlt minus 3 theta minus 1. This is the dimension of the coefficient of thermal conductivity. So these are some quantities whose dimension we should know. This can be used in the numericals. As I already told you that there are three uses of dimensions. Now we will do some numericals on these three uses of dimensions. So first of all, we will do a numerical on the first relation, that is to check the accuracy of a relation. Now two types of question can be asked in this. First of all, say we are given a relation and we are being asked to check the accuracy of a relation. And the second type of question can be given that we are given that the relation is correct. हमें दिया हुआ है कि रिलेशन सही है और उसके मदद से हमें क्वांटिटीज के डायमेंशन निकालने को कहा जाएगा. अब जैसे ये है रिलेशन है, ये हमें चेक करना है कि रिलेशन एक्यूरेट है या नहीं है. वी हैव टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ दिस रिलेशन. यहाँ पे F क्या दिया हुआ है, हमें फोर्स दिया हुआ है. S is given to us, that is displacement. M is given to us, it is the mass. And in fact, U and V are the velocities. U we know is the initial velocity and V is the final velocity, respectively. Now we have to check whether this relation is correct or not. Now we can check the accuracy of a relation using the principle of homogeneity of dimension. Always remember, according to the principle of homogeneity of dimensions, dimensions can only be multiplied or divided. They cannot be added or subtracted. तो अगर किन्हीं भी जैसे कोई इक्वेशन क्वेश्चन को ले लें, एफ इंटू एस है हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम बी स्क्वायर. अब इसमें इन दोनों टर्म्स के बीच में क्या का साइन है, माइनस का साइन. चाहे दो टर्म्स के बीच में माइनस का साइन हो प्लस का साइन हो, उनके डायमेंशंस क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए. अब यहाँ पे एफ इंटू एस है, इसका मतलब जो एफ इंटू एस का डायमेंशन है वही किसका डायमेंशन होना चाहिए, हाफ एम बी स्क्वायर का, और वही हाफ एम बी स्क्वायर का भी डायमेंशन होना चाहिए. अब एफ यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, एज ऑलरेडी मेंशन इन द क्वेश्चन, एफ इज द फोर्स. नाउ वी नो व्हाट इज द डायमेंशन फॉर फोर्स. द डायमेंशन फॉर फोर्स इज mlt minus 2. What is the dimension of length, L? Do remember, numbers do not have any dimension. So half will have no dimension. Half will have no dimension. So now what will happen? M. What is the dimension of mass? M. What is the dimension of velocity? Lt minus 1 square. Now minus. Again, half will have no dimension, M. What is the dimension of velocity? Lt minus 1. Now, if I multiply this, I will get 1
एम के पावर यहाँ 1 है, एल के पावर यहाँ 1 है, 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना होगा 2, टी टू द पावर माइनस 2. If I open the power here, that is 1. 1 into 2 is how much? 2. T to the power minus 1 into 2, minus 2. Minus m. Again, here it is 1. 1 into 2, 2. Minus 1 into 2, minus 2. Now, if we see, the dimensions of all the three terms are equal. So the relation is dimensionally correct. So the relation is dimensionally correct. So in case there is a, I told you, there is a plus or negative sign in between any two quantities in a relation, then the dimension of these quantities has to be equal. This followed from the principle of homogeneity of dimension. The first use, that is to check the accuracy of a relation. Now we will do a question from the another use. We are given that the frequency n of an oscillating drop, एक drop है जो कि oscillate कर रहा है. The frequency n of an oscillating drop depends upon, first of all, the radius. We are given that it is depending upon the radius r of the drop. Second, density, which is denoted as rho, and the surface tension S of the liquid. Now we have to derive the relation between them with the help of dimensions. So we have to obtain a formula for frequency. Obtain a formula for frequency with the help of dimension. Now whenever we have to derive a relation with the help of dimensions, what do we do? Since we are given that the frequency is depending upon three factors: radius, density, and the surface tension. So whatever thing is given in the question that is depending, so we write it in the left hand side. And the things on which it is depending have the frequencies depending upon radius, density, and surface tension. So we will write these quantities in the right hand side. In the next step, we will assign powers to them. जैसे रेडियस है, हम क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड में क्वांटिटीज, जो भी हमारे पास राइट हैंड साइड में क्वांटिटीज है, उनको हम क्या करेंगे, पावर असाइन करेंगे. अब जैसे हमने रेडियस को क्या पावर असाइन कर दी, ए, रो को बी कर दी और एस को सी कर दी. अब ये पावर देते हुए ध्यान रखिएगा, जैसे अभी मैंने ए पी सी पावर दी है, अगर मान लीजिए कोई एक क्वांटिटी ऑलरेडी इन्वॉल्व हो रही हो, वहां पे यूज हो रही हो, तो उसको ना लेके आप एक्स वाई जेड मान लीजिए. अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, जो भी क्वांटिटीज यहाँ यूज हो रही है उनके हम डायमेंशन सब्सटीट्यूट करेंगे. एंड डिनोट कर रहा था फ्रीक्वेंसी, अभी मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी जो है टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है. आई टोल्ड यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या है, टी माइनस 1. तो यहाँ पे क्या करूंगा, आई विल सब्सटीट्यूट अ डायमेंशन. और मुझे डायमेंशन पूरा लिखना चाहिए क्योंकि एम की पावर कुछ नहीं है, जीरो लिख दी, एल की पावर जीरो, टी की पावर माइनस 1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. आर क्या, रेडियस है, रेडियस का डायमेंशन मैंने एल लिख दिया. अब रो क्या है, डेंसिटी. डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम. मास का डायमेंशन क्या होता है, एम. वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि एल क्यूब. और क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम है तो एल क्यूब, एल की पावर -3 हो जाएगा और पावर भी दी. एस एस अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था, सरफेस टेंशन का डायमेंशन, सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ होता है, उसका डायमेंशन हमने निकाला था एम टी -2. यहाँ पे बताया था मैंने सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या है, एम टी -2. तो हम इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लें. तो एस का डायमेंशन हमने लिख दिया एम टी -2. तो पहले स्टेप में तो जो क्वांटिटीज थी हमने उनको लिखा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लग दिया. सेकंड स्टेप में हमने डायमेंशन. अब थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में जो भी राइट हैंड साइड है
उसको एक्सपेंड कर लेते हैं। एन की पावर 1 है तो 1 इंटू ए, एल 1 इंटू ए हो गया ए। एन की पावर यहाँ 1 है, यहाँ बी है तो एम की पावर बी। एल की पावर -3 इंटू बी हो गया तो 3b। एम की पावर यहाँ 1 है, यहाँ सी है तो 1 इंटू सी कितना हो गया सी। टी की पावर -2 इंटू सी कितना हो जाएगा -2c। तो हमने राइट हैंड साइड को एक्सपेंड कर लेते हैं। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अब राइट हैंड साइड में m वाले टर्म को एक साथ कलेक्ट कर लो, तो m की पावर आ गई b इंटू एम टू द पावर c। इसी तरह l वाले टर्म को कलेक्ट कर लो, l की पावर a, l की पावर -3b, ये यूज हो गए। अब t की पावर कितनी है -2c। तो m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर -1। अब आपको पता है अगर बेस बराबर होती है तो पावर ऐड हो जाती है। यहाँ m की पावर b है, यहाँ पे c है, तो m की पावर कितनी हो जाएगी b प्लस c। यहाँ l की पावर a है, यहाँ -3b है तो a -3b और t की पावर -2c। फिर अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयर द पावर्स ऑफ m, l एंड t ऑन बोथ दी साइड्स। अब यहाँ पे m की पावर कितनी है 0, यहाँ पे कितनी है b प्लस c, तो b प्लस c कितना हो गया 0, तो यहाँ से मैं b को -c भी लिख सकता हूँ। इसी तरह आप l की पावर को कंपेयर करो, यहाँ पे राइट हैंड साइड में a -3b है, यहाँ पे कितना 0, तो यहाँ से मैं a को क्या लिख सकता हूँ 3b। और लास्ट जब t की पावर कंपेयर करें, यहाँ -1 है, -2c, तो -1 हो गया -2c, तो c हो गया 1/2। तो a की वैल्यू, c की वैल्यू मेरी हाफ आ गई है। अब c की वैल्यू को, इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -हाफ। तो a मेरे पास b आ गया -हाफ, c आ गया मेरे पास हाफ। अब इस b की वैल्यू अगर मैं इसे यहाँ रख दूंगा तो a की वैल्यू होगी 3 इंटू बी, तो 3 इंटू -हाफ। तो a की वैल्यू क्या हो गई -3/2। तो मेरे पास तीनों की वैल्यूज आ गई है। a की वैल्यू क्या आ गई है -3/2, b की वैल्यू आ गया -1/2 और c की वैल्यू आ गई 1/2। अब ये जो भी मेरी a की वैल्यूज निकली हैं, अब उसको मैं मेरा सबसे फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ a b c इन द इक्वेशन नंबर 1। मेरा इक्वेशन नंबर 1 कौन सा है ये, तो n क्या था मेरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर a, रो टू द पावर b, s टू द पावर c। अब r की पावर कितनी हुई, ये कितना आया हमारा -3/2, रो की पावर b कितना आया हमारा -1/2, s की पावर c कितना हाफ। अब कभी भी अगर पावर निगेटिव आ रही हो तो उस टर्म्स को आप डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं, जो r की पावर 3/2, रो की पावर 1/2। अब हम क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे सब रूट, सब में टर्म्स में 1/2 आ रहे हैं, तो 1/2 हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 को स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो s, क्योंकि ये इन दोनों टर्म्स की पावर हाफ ही है तो ये तो s अपॉन रो ही रह गया, लेकिन इसकी पावर r की पावर 3/2 है, तो 3/2 का मतलब होगा 1/2 इंटू 3, तो ये आ जाएगा हमारा, इसको हम लिख सकते हैं r। तो हमारा क्या फॉर्मूला आ गया, n इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ s अपॉन r³ इंटू रो। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे एक कांस्टेंट के आ गया, तो n का फॉर्मूला आ गया s अपॉन रो इंटू r। So this is the relation which we have derived dimensionally.